So hello everyone and welcome back to the new video of this channel. So in this video we will talk about a problem which is word search lead code 79 problem. So let's see the problem statement. So problem is saying that we have given a m cross n grid of characters board and string word. Return true if the word exists in the grid. The word can be constructed from letters of sequentially adjacent cells where adjacent cells are horizontally or vertically neighboring. Okay, the same letter cell may not be used more than once. Okay, so it is same like a rat in maze problem. So in उसमें भी सर्च करते थे इसमें भी सर्च कर रहे हैं ठीक है. In this problem is saying that we have given a matrix or grid m cross n type and a bird a b c c e d like this. So we have to find this bird in this matrix and the we can't use the same bird two times means it should be used only once. So let's see this example. We have given this matrix or grid A, B, C, E and S, F, C, S and A, D, C, E, F, A, E, E. Okay. And bird A, B, C, C, E, D. So now we will check like kya first character of this bird is exist in this matrix or not. Because if it is exist, then we will go further. We'll check like A is exist or not. A is exist. So this condition is true. Now we'll see we have four directions. Like we can go up, down, left, and right. If we go up, then it will go out of the bound because I am at A, this cell, first cell. If we go up, then I will go like out of the bound. If we go left, then also I will go out of the bound. If we go down, then we will see like there is a F, S. S character is S, but we need character B. So it will be false. Now we have only one way to go, like we can go right. If we go right, then we will find B. B is here. Yeah, it is a perfect. But we have to we can use the only one character one time. So we can't use the character on two times or three times. So we have to keep track of this like कि उस कैरेक्टर को मैं विजिट कर चुका हूँ या नहीं कर चुका हूँ लाइक we can create a visited array or the another way to check like we have visited or not is we can if I have used this character A, so I can mark this character as a dot. So that will show me like it is visited or not. If a dot is there, so I can make sure that I have visited this character. So I will not go on that cell. So I have visited this A. Now I will mark it as dot. So now I will go right side. Then there is a B. So इसके पास कितने इस कैरेक्टर के पास कितने वेज है फोर वेज है. अप जाऊंगा तो आउट ऑफ द बाउंड चला जाऊंगा. लेफ्ट जाऊंगा तो यहाँ पे डॉट पड़ा हुआ है जो ये शो करेगा कि यार ये विजिटेड है तो वहाँ नहीं जा सकता. अगर मैं डाउन जाऊंगा तो एफ पड़ा हुआ है बट हमें नेक्स्ट कैरेक्टर क्या चाहिए सी चाहिए. सो एक ही पे बचा हुआ है राइट जाने का. राइट में जाऊंगा तो सी पड़ा हुआ है. सी पड़ा हुआ है तो सी मैच हो गया मेरा तो मैं जा सकता हूँ ठीक है. फिर मैं बी को डॉट से मार्क कर दूंगा. फिर अगेन फोर कंडीशंस है. फिर सी या इस पाथ पे जाऊंगा फिर इस पाथ पे देन इस पाथ पे. नाउ we have we have visited the whole word string. So for this I have to take a index count like on which index I am there. Okay, so if I am at the last index of bird and I have visited that, so that is showing like कि मैं उस पूरी string को visit कर चुका हूँ. So in that case I have to mark it as true. So it is same like this कि we have four ways x or y. We have four ways. Either I can go up, down, or left and right. If we go up, then I have to check the condition like it should be in the bound. Like it should not be in out of the bound. If I am at the A, I have to check like I can go up or not. Here I can't go up because if I go up, then I will go out of the bound because मैट्रिक्स से बाहर चले जाएंगे. लेफ्ट में भी जाएंगे मैट्रिक्स से बाहर चले जाएंगे. राइट में जा सकते हैं और डाउन में जा सकते हैं. नाउ आई हैव टू चेक लाइक इफ मैं डाउन में जा रहा हूँ ठीक है तो मेरे को चेक करना है कि वो नेक्स्ट कैरेक्टर से मैच हो रहा है या नहीं है. मतलब बी से मैच हो रहा है या नहीं है. नहीं हो रहा ऐसे यहाँ पे तो now I have only one way to go. Like if I go right side, so right side में जाएंगे तो B पड़ा हुआ है. B पड़ा हुआ है तो मेरे को वही कैरेक्टर चाहिए B because second कैरेक्टर इज B. So इसको बीच यहाँ पर आ जाएंगे और A को डॉट से मार्क कर देंगे ठीक है. डॉट इज शोइंग लाइक आई हैव विजिटेड दैट कैरेक्टर और नॉट. So because I can't use the same character two times or three times multiple times.
So that's why I'm doing this. So now let's do the code for this. Coding part is very simple. Like what we do is we'll create int n equals to board dot size, and like I can check if n equals to 0. In that case I can simply return false because the size of the board is 0. And if int m equals to board of 0 dot size, because board is the 2D array, board of 0 dot size. ठीक है. Now again I can check if bird dot size, if bird dot size equals to 0. अगर bird dot size ही मेरा 0 है, in that case I can also return false. ठीक है. Now I have to apply a loop, two loops. Why we are applying? I will say like int I equals to 0, I less than n, then I plus plus, and for int j equals to 0, to j less than m, then j plus plus. Now in by using these loops, I have to check a condition like first character of bird is matching in this grade or not. Like if like if I write this, if be the board of area, board of I of j equals to the first character bird of 0. If it is matching, now I can go further. So further जाएंगे तो कैसे करेंगे? I can use a solve function. In solve function I can pass some things like if this condition is matching, like okay, so if board of I of 0 equals to bird of 0, it is showing like the first character is matching. Now I can do the function calls. So function calls will be like if solve function. So in solve function what I can pass is board, then bird, then I, then j, then उसका साइज n कॉमा m कॉमा एक इंडेक्स ले लूंगा जिस इंडेक्स से मैं उसको ट्रेवर्स कर रहा हूँ वर्ड को 0. ठीक है. इफ इट इज ट्रू, simply we can say true. Otherwise, after this loop, second loop, I can simply say return false. Now my task is to generate this solve function. So for generating this solve function, let's do this bool solve function. In solve function, I have to pass this vector board. So let's pass it. I'll pass it by reference. Okay. So now, okay, string bird, comma, int I, comma, int j, comma, int n, comma, int m. So let's say expand it. Okay, comma, int k. I am taking k. वैसे इंडेक्स लेना चाहिए था. ठीक है, इंडेक्स ही बोल देते हैं इसको. ठीक है, फिर कंफ्यूज हो जाओगे यार. ठीक है, चलो बोल देते हैं. ठीक है, इंडेक्स. तो के ही बोलते हैं इसको, फिर लिखने में भी दिक्कत होगी. ठीक है, के बोल दिया. Now I have to write some base cases for this because it's a recursion, so I have to write a base case if k is greater than equals to my size of this bird. So bird dot size, it is showing like कि मैं end पर पहुंच चुका हूँ. ठीक है, तो end की bird जो भी string है, like यहाँ पे देख सकते हो a b c c e d, अगर मैं d या उसके बाहर पहुंच चुका हूँ, it means I have to simply return true because I have traversed a full string. So I have to simply return true. Now the second condition is if I is less than 0. Yeah. I is greater than equals to n. Yeah. J is less than 0. Yeah. J is greater than equals to m. And एक और कंडीशन और आएगी, बोर्ड ऑफ आई ऑफ जे इक्वल्स टू डॉट पड़ा हुआ है वहां पे. अगर these are some condition, in that conditions I have to simply return like फॉल्स. एक और कंडीशन और लिख सकते हैं हम, जैसे बर्ड ऑफ, जैसे बर्ड ऑफ के, लाइक kth is the index, bird of k is not equal to board of I of j.
इट मीन्स लाइक वो बर्ड भी इक्वल नहीं है, ठीक है। लाइक ये चार कंडीशन क्या शो कर रही है, आउट ऑफ द बाउंड कंडीशन, ठीक है, कि अगर मैं बाउंड के बाहर चला जाऊँ, दिस कंडीशन इज शोइंग लाइक आई हैव विजिटेड दैट कैरेक्टर ऑलरेडी, एंड दिस कंडीशन इज शोइंग कि वो बर्ड ऑफ आई ऑफ जे उससे मैच नहीं हो रहा है। इन ऑल दिस कंडीशन आई हैव टू रिटर्न फॉल्स। वैसे उस इस वाली कंडीशन को मैं अलग लिख देता ना तो अच्छा रहता, पर इसमें ही समझा रहा हूँ, ठीक है। दीज फोर कंडीशन आर शोइंग out of the bound condition. This condition is showing I have visited that character already, and this condition is showing that character is not matching the word string. So in all these conditions, I have to simply return false. Okay. So I have done this. Now I have to write another condition if a bird dot size equals to bird. Okay, and bird of k equals to board of I of j. These are showing like bird of k, kth bird वो मैच कर रहा है board of I of j से, और bird dot size equals to 1 है. In these conditions I have to simply return true because these are the perfect condition for us. Return true, and I have to mark that bird ever dot. So board of I of j equals to that dot. सो डॉट बना देंगे, ठीक है। सो डॉट से उसको फुल अप कर लिया, ठीक है। नाउ आई हैव टू टेक अ टेम्परेरी फंक्शन विच इज इनिशियली मार्केट एज फॉल्स, एंड आई हैव फोर डायरेक्शंस लाइक इंट एक्स, एक्स की कितनी डायरेक्शन है, फोर है, तो फोर साइज का एरे बना देंगे इक्वल्स टू जीरो कॉमा सॉरी कॉमा जीरो कॉमा -1 कॉमा 1 -1 कॉमा 1, and also I have four directions for y also, so let's create it। बाई के लिए जो बाई की भी डायरेक्शन मैंने बताई थी ना वो भी फोर है, तो इसलिए हो गया तुम्हारा -1 कॉमा 1 कॉमा 0 कॉमा 0। हाउ आई एम राइटिंग दिस, लेट्स सी, बिकॉज यू कैन सी आई फोर डायरेक्शन फॉर एक्स, 1 0 0 -1 1, एक्स के लिए, बाई के लिए जीरो, बाई के लिए क्या है 1 -1 0 0, ठीक है, क्योंकि बाई वाली चीज पहले आएगी। तो नाउ आई हैव फोर डायरेक्शन फॉर बाई ऑल्सो। नाउ आई हैव टू अप्लाई अ लूप फॉर इंडेक्स इक्वल्स टू 0 टू इंडेक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 4 एंड इंडेक्स प्लस प्लस, ठीक है। नाउ आई हैव अप्लाइड अ लूप एंड आई एम नाउ हैव टू चेक लाइक टेम्प इक्वल्स टू टेम्प और दिस फंक्शन लाइक सॉल्व फंक्शन को कॉल मारेंगे। सॉल्व फंक्शन में मैंने क्या पास कर रखा है, बोर्ड कॉमा बर्ड कॉमा आई प्लस एक्स ऑफ इंडेक्स, एक्स वाले इंडेक्स को जोड़ देंगे, कॉमा बाई प्लस बाई ऑफ इंडेक्स, आई प्लस आई ऑफ इंडेक्स कॉमा वाई प्लस वाई ऑफ इंडेक्स कॉमा एन कॉमा एम कॉमा इंडेक्स को आगे बढ़ा देंगे के प्लस 1 कर देंगे, ठीक है। नाउ आई हैव डन दिस, and finally after this loop board of I of j equals to bird of k, क्योंकि इसको करना पड़ेगा कि बोर्ड ऑफ आई ऑफ जे को बर्ड ऑफ के इक्वल करना पड़ेगा, और फाइनली वी हैव टू रिटर्न 10। so this is the code. Now let's run this code and see if this will work or not. It is some typo, temp. Array. Now again run this, temp equals to temp और by plus ओ जे प्लस सॉरी, so it is giving me some runtime error. Solve function board of bird I plus x of index j plus y of index and m और k plus 1, ठीक है, परफेक्ट कंडीशन।
Now see this here. So now again let's run this. I've done this again, like if I run this code and see if this will work or not. Yeah, it is working perfect. Let's submit this code. So now you can see here, uh, it is working perfect. So now let's see what I've done is, let's see again. Okay. So by using this, I've initialized something and I'm checking like if bird.size is equal to 0. In that case, I will return false. Now I have to check like first character of the bird is matching in this grid or not. Like I've applied a two loops. If bird of 0 equals to board of I of j. If this is true, then I have to make a function call, and function call अगर सही होगा तो true कर देंगे और नहीं होगा तो false कर देंगे. Now I have to check like I'm at the ending index of that particular string bird. It means I am true. Okay, I have traversed all the strings and I have find all the characters, so that's why I will return true. I have to check from out of the bound condition. These are some out of the bound condition. This is the visited condition. Like if I have already visited that character, and if the character is not matching, in all conditions I will return false. And I have to check this condition if the character is matching the string, the character of the string is matching in board of I object. In that case, I will return true and I will mark it as dot. Now I have to take a temporary variable and I have four direction for x and four directions for y. So फोर डायरेक्शन बोल सकते हो, उसको एरे में मैंने शो कर दिया, ठीक है. And now I am checking a loop. I am applying a loop and in loop I am checking like solve of this function. ऐड होता जाएगा x plus index I आई वाले में और जे में बाई प्लस इंडेक्स ऐड होते जाएगा. फाइनली बोर्ड ऑफ आई ऑफ जे इक्वल्स टू बर्ड ऑफ के, एंड फाइनली वी विल रिटर्न आवर 10. So these are the code. If you find this helpful, then please like, share, subscribe. तब तक के लिए बाय.